So I am Crash Master. So हम लोग Crackathon अटेम्प्ट करने गए थे Crackathon राउंड 1 which happened in KJ Somaya College and वो आज था आज राउंड 1 एंड राउंड 2 था। हम लोगों को सिर्फ ये लास्ट सवाल छोड़ के बाकी सभी सवाल बन गए एंड राउंड टू में भी ये दो सवाल बन गए, लास्ट वाला नहीं बना। सो अभी के लिए मैं सभी सवाल का पीछे ले रहा हूँ। हमारा क्या लॉजिक था वो सब एक्सप्लेन करता हूँ मैं, करने वाला हूँ मैं। सो या एंड मेरे टीममेट्स वर प्रशांत एंड वैभव। मेजोरिटी उन्होंने ही मुझे कैरी किया है ये सभी सवालों में, बट हाँ। सो हाँ, अभी मैं पीसीडी टाइप ले रहा हूँ, देखते हुए। सो क्वेश्चन 1, swag bags. Basically, Omek wants to maximize the number of swags he can buy and carry. Each bag can cost $5 and he can hold 3 swags given in the total number of swag Omek wants. Find the number of bags that need to be carried. Basic simple question. इसमें basically हम लोगों को the n निकालना है. We have to find the number of bags. ठीक है? We are given n, so and in each bag they can only hold 3 swags, so we have to divide n by 3 and उसका ceiling लेना है। ceiling क्यों लेना है? ceiling लेना है इसलिए because if we just straight up divide by 3 we will get the floor, and say अगर remainder 2 है, so that 2 swags you will not be able to carry within those n by 3 bags, so उसका ceiling लेना है। इसका हम लोगों ने क्या किया, सबमिशन में दिखाता हूँ ये रिजल्ट्स। ये मैंने अभी सबमिट किया है, कॉन्टेस्ट के वक्त हम लोगों ने प्रशांत से सबमिट किया था। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी डिड। इनपुट लिया एंड सी एन टेस्ट केसेस, वाइल टेस्ट केसेस, देन इनपुट एन सी एन एन एंड देन वी डिड दिस. Why did we add n plus 2? That we added n plus 2 because of ceiling लेना है। ceiling के लिए क्या करते हैं? ceiling के लिए basically हम लोग let's say the denominator is d and the numerator is n, and if we are going to divide it by ceiling लेना है इसका, so basic logic is numerator bracket, numerator plus denominator minus 1 divided by d. This is how you take the ceiling. So यही किया हम लोगों ने इसमें, and that one AC आ गया हमें। AC का हाँ, so all clear। ये पहला सवाल था, आसान था। सेकेंड क्वेश्चन, एनिमल एनक्लोजर। सृष्टि डिसाइड्स टू विजिट द ज़ू एंड द ज़ू बहुत सारा चीज़ है। सो बेसिकली इसका क्या चीज़ है मैं बताता हूँ। बेसिकली हमें एक इंटीजर एंड प्रीसीड पोजीशन k. Basically we will be given a string of length n and k is the place where Srishti falls, ठीक है? So and k will lie between some w's, two w's, ठीक है? So for example here in this case Srishti fell at 4 and note this 4 is in 1 base indexing, normal string में 0 base indexing होता है, so -1. So Srishti is 3 and this is 3, so Srishti fell between this w and this w, ये w के बीच में, and she has to output this JDD, sample output JDD. Okay, वैसे ही है। Again 3, so 2 place 2 is this, so we have to output OSS, output OSS. Same here 2, so this one, and so we have to output from here to the next W. So basically यही करना है। इसके लिए सीधा आइटरेट करो और कुछ है नहीं इसमें।
टेस्ट केसेस लिए सब, फिर इनपुट लिया, स्ट्रिंग का इनपुट लिया, फिर हम लोगों ने आइटरेट करना चालू किया. दिस इज द फ्रंट पोजिशन. काइंड ऑफ फ्रंट का कौन सा पोजीशन है, बैक का कौन सा पोजीशन है, वो हमने पहले फाइंड आउट कर लिया जहाँ पे W है. So we went to k minus 1. Why k minus 1? Because k is in 1 based indexing. We want in 0 based indexing. So इधर गए and we found the first wall. We did a while loop to find the wall, and after we found the wall we broke it. फिर इधर सेम लॉजिक, while loop जिधर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है ब्रेक हो जाता है, while loop खत्म हो जाता है. And then we straight up see out the substring. Substring is from f plus 1 and it ends at fb minus f minus 1. So इतना ही किया, रन किया, सबमिट, एंड और करेक्ट एज आई सेड और करेक्ट. ये हमारा कोड चल गया, ये भी काफ़ी आसान था. फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. Yes, n courses to complete and intelligence m starts with m. Amrit sir decreases for KT. So basically ऐसे किया है. And also to note, all the courses must be completed sequentially. अगर sequentially नहीं होता, then we could have just taken all the courses, just sorted all of them and see out कर देते हम लोग. बट सीक्वेंशली लिखा है, सो सॉर्ट करने के लिए हमको ग्रेडली जाना पड़ेगा. ग्रेडली कैसे जाएंगे? फर्स्ट वाले पे जाएंगे. यू विल सी इफ दैट नंबर इज ग्रेटर देन आवर करंट m. इफ इट इज ग्रेटर देन वी विल यूज Amrit's help. And after using Amrit's help, our intelligence will reduce by k, but that question would be done, that question will be solved. So it's the same logic. टेस्ट केसेस, फिर इनपुट लिया हम लोगों ने इधर एंड वेक्टर का इनपुट लिया. फिर फॉर द n गिवन केसेस, एज इन n गिवन वेक्टर्स द डिफिकल्टी आई मीन ये. For that we first check if m is lesser than or equal to 0. Why did we do that? Because we have to find out how many courses Rian is able to complete before his intelligence becomes 0. So our intelligence must not be 0, it should be greater than 0. And there ऊपर लिखा है कि note it is guaranteed that his intelligence cannot decrease further than 0. So सिर्फ एक बार ऐसा चेक करना है कि lesser than equal to 0 है तो ब्रेक कर दो. So currently करते हैं हम if it is lesser, the difficulty of the course is lesser than my current intelligence, lesser than equal to, then I can straight up add the counter variable, which is here, which is our answer. Counter starts from 0 and we straight up add our counter variable. Else if it is greater, else wala case, if it is greater, as well as the number of times we can ask for Amrit's help, which is O. If that is greater than 0, then answer plus plus O minus minus, क्योंकि number of times decreases, answer का counter increases, and we reduce our intelligence by k. Else we straight up break, क्योंकि अगर O is lesser than 0 we straight up break. ठीक है, और फिर सी आउट आंसर किया हम लोगों ने. ये भी काइंड ऑफ स्ट्रेट अप बेसिक ही था. सो या इसका इतना ही था. ऑलमोस्ट सभी सवाल काइंड ऑफ इजी थे, बट या हाँ. सो फर्स्ट सेकंड थर्ड वी आर एट फोर्थ. यप, वी आर एट फोर्थ वाला कुछ लोगों का गलत आया था. सो या फोर्थ वाला हम भी टाइम पास कर रहे थे, उस पर थोड़ा हम लोगों ने थोड़ा हगा, बट आ गया फाइनली एंड में. So small down and percussionist and striking at regular intervals. Ith percussionist strikes his instrument at every AI seconds, and at 0 all of them strike together. Here you are tasked to determine the early.
the earliest time after 0 when everybody will strike together. ठीक है. बेसिकली ऐसा सवाल दिया कि एक 5 का वेक्टर लेना है, 5 का वेक्टर है, एंड देन there are two people who are idiots, but yeah, so basically the guy at number 2 and number 4, वो लोग 2 बार करेंगे, 2 बार precaution, as in they will increase the time by 2, multiplied by time by 2. so ये 4 नंबर वाला बंदा every 8 seconds करेगा, एंड ये 2 नंबर वाला बंदा every 8 seconds करेगा, एंड 4 नंबर वाला बंदा every 16 seconds करेगा. Here you go. Explanation. So basic logic is, if they start at 0, the next time all of them will do that together is at their LCM. Sorry. Next time they will all do that together is at their LCM. So LCM निकाला हम लोगों ने. First off, you have to change this current vector to this vector. So the second position वाला multiplied by 2, fourth position वाला multiplied by 2, सभी को वैसे चेंज करना है. एंड इसका हमारा सोल्यूशन दिखाता हूँ. So ये solution है हमारा, and yes, ये since there was only one test case तो सही रखा है हमारा. and input लिया, vector का input लिया, फिर k का input लिया. k is basically number of the precautionist who will do it at a multiple of 2, multiplied by 2 करेंगे करते हैं. So x and x minus 1, because x is in 1 base indexing and the vector is in 0 base indexing, and उसको multiplied by 2 किया हमने. So we have gotten the new vector here, which is 3, 3, 8, 3, 8, 6, 16, 12. Now हम लोगों को LCM निकालना है. LCM has a property where A into B equals GCD of A comma B into LCM of LCM of A comma B. So using this property, we just basically shifted this GCD to the other side, divided by GCD किया हम लोगों ने, and we got the LCM. And note this property works only two elements at a time. Basically, you cannot use this property over the entire sequence. You cannot multiply all these elements together and then इसका GCD और LCM निकाल के डिवाइड करो. That will not work. No. तुम लोग खुद से ट्राई करके देख सकते हो. But basically, if you multiply all these, you will get something in the thousands or 10,000s. But in सभी का जो GCD है, that will be 1. So that is not going to work. And so hence your LCM will be in thousands or 10,000s, but your real LCM is 48. So that LCM is wrong. Now what will you do? Basically हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने आंसर वेरिएबल, आंसर is the number, answer is the current LCM. So फर्स्ट आइटरेशन में हम लोगों ने LCM equals the first element डाला, और
GCD also equals the first element is yes. Then हम लोग iterate करते गए from 0 to n, 0 to n, हाँ. और फिर we first found out the GCD. We find the GCD by using the current answer, which is the LCM so far, into the current element and the current element. उन दोनों का GCD निकालते हैं हम लोग. And फिर जो LCM होता है of the current LCM, this answer is going to carry the LCM of all the numbers previously to it. So this will have till p minus I, and then we are going to multiply this by p of I and divide it by g to get the current I, current LCM, and we will straight up output this LCM. So ये हुआ. Oh shit, observation से कुछ देने चाहिए थे क्या? I guess so. एक मिनट मैं तेरे से observation देता हूँ. Observation 1, you want to find a total number of bags to be carried, and each bag can hold only 3. You get the observation from the question itself. So you need at, at least n by 3 bags, and exactly the ceiling of n by 3 bags. Next question. Animal enclosure. Here you just straight up iterate the run. Observation में सिर्फ wall ढूंढो और पहले दोनों साइड की wall ढूंढो, edges की wall ढूंढो, and after you find the edges, just iterate over the entire thing and see out. ठीक है. So basically हम लोगों ने इधर substring use किया था इधर. Instead of that substring you can also just iterate from P to F and see out everything that you find in between. Next question was online courses. Online courses में observation कुछ ऐसा था नहीं. Basic observation was कि m should not be lesser than 0. If it goes lesser than 0, then you have to break it. Even you have to break it even if your current O is higher, you still break it. Like the number of times number itself can be used is greater, you still break it. And क्योंकि इधर before दिया है, ठीक है. So हाँ, और बस इतने observation था. And बस. And also observation 2, O cannot be lesser than 0. So अभी lazy precautionary का observation is इसका LCM पे ही सब लोग एक वापस ट्राई करते हैं. That is the thing. Observation is every guy strikes at its multiples, and the multiple of the time when everybody will strike together was at their LCM, least form of multiple. That is the name. So फिर oh my peonies. ये पूरा बाकी एक्सप्लेन करना है. So basically इसमें kind of like sliding window है, क्योंकि the gardener only allows him to plug in a consecutive line. Hence from that we just understand कि sliding window होगा. And so basically formally you can only pick consecutive subarray, ठीक है. And you need
exactly, exactly. This is a highlighted word. Exactly. K different colors, not greater than, not lesser. Exactly K different colors. And you have to find the maximum number of peonies. अगर हम लोग को exactly K different colors चाहिए, then we will just use a map. ये कोड है हमारा. तो टेस्ट केसेस लिए, इनपुट लिया हम लोगों ने. Now here comes the map part, the basic your logic here. So हम लोगों ने sliding window के लिए LR लिया, and this maxi is the current maximum size that we have of our map, the current maximum number of peonies that we can pick up. So while R is lesser than N, we are going to use a sliding window. Sliding window पता है, I'm hoping पता है. Even if नहीं पता, sliding window is basically we okay, nice. We take an array, इधर से इधर, we check here till some, this is L and this is R, till some condition is fulfilled or fail, we continuously move increment R, and then after that condition hits, we slowly start incrementing L, and then check at what point that condition fails, and then move R again, move L again. So between that L say R wala portion, this portion, this is kind of a window. So this is a sliding window. और ये विंडो स्लाइड हो रही है, इस साइड जा रही है. दिस इज अ स्लाइडिंग विंडो. सो हम लोगों ने यही चीज यूज की इधर. सो बेसिकली हम लोगों ने आर वी वेंट टू द वी ऑफ आर, जो द गाय हु इज एट found the value of the guy who was at v at the rth position in the vector v, and then incremented its value. ये जो map है, this map we basically build a frequency map which counts the frequency of the keys. This guy is called key, and this guy is called value. The first guy is called key, the second guy is called value. Keys must be unique, values may or may not be unique. Map है, ऐसा ही मैप डेटा स्ट्रक्चर है, समझ लो. सो यस, फिर हम लोगों ने वैल्यू इंक्रीमेंट करते गए, एंड हम लोग चेक करते गए कि मैप डॉट साइज इज लेसर इज ग्रेटर देन के. सॉरी, हम लोग चेक करते गए कि अगर मैप डॉट साइज इज ग्रेटर देन के, तो हम लोगों को एल वाला पॉइंटर आगे लेना पड़ेगा. यही बेसिक लॉजिक, सेम थिंग. ये हमारा अरे है. we went to R, here is our current R, and damn, I shattered that drum. Okay, this is our current R. Right, this is okay. This is our current R. Brother, let's say, so this is our current R, and somewhere here would be our L. Somewhere here would be our L, and हम लोग, damn, what the stroke very. Yep, bingo. So this is our R, this is our L,
अगर इसमें if there are greater than k distinct elements then we will stop moving here. जब हम लोग इसको इस साइड लेते हैं then we are taking in new elements. जब हम इसको इस साइड लेते हैं then we are removing the current elements out of it. ठीक है, same thing. If our map dot size is greater than k then we have to remove elements, so we have to make the L come forward, and that is basically what we have done, L plus plus, and we have removed the current L, the element at the L, उसकी frequency हम लोगों ने एक से कम की, और इधर हमने here we checked if the current frequency of that element that we removed is lesser than or equal to 0, then we erase that element from our current map. Question: why did we do this instead of just सीधा करते जाओ? Because otherwise map.size will continue to have this element p of this element with its frequency equal to 0, and if it continues to have that element inside it then हमारा map.size में थोड़ा इशू आएगा कि उसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसकी वैल्यू कम करनी है, and we are always checking with map.size, not an integer or anything. Also ये मेरे सीनियर ने बोला, समझाया मुझे. So there is a specific reason why we are putting integer here. Usually when you use map.size or vector.size or something like that, you are given output in size underscore t. This is similar to int ll like that. So हम लोगों ने बेसिकली टाइप डेफ किया है इसको, ये साइज अंडरस्कोर टी को हम लोगों ने टाइप डेफ किया है इनटू इंट, एंड दैट इज बेसिकली इट. वही किया हम लोगों ने इसमें. सो एल प्लस प्लस हुआ एंड वेल फ्रीक्वेंसी ऑफ द गाय हु वाज एट एल्थ पोजीशन उसको कम किया हम लोगों ने इधर, एंड यू आर बेसिकली द मैप डॉट सॉरी sliding window वाला part. So basically sliding window. We are sliding the L वाला pointer ahead, and here we are sliding the R वाला pointer ahead. So here we check if our current map dot size equals k. Why exactly equals k? इधर जो मैंने explain किया था just exactly है. हम लोगों ने पहली बार जब solve किया ये exactly पढ़ा नहीं, हम लोगों ने सीधा किया. सो वैसे वो हमारा रॉन्ग आंसर आया. फिर हम लोगों ने एग्जैक्टली पढ़ा और इक्वल टू इक्वल डाला. सो इफ इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू के ओनली देन यू चेंज योर मैक्स डॉट साइज, एंड ये बेसिक मैक्सी का r माइनस एल प्लस वन का लॉजिक है, एंड देन वी मूव r अहेड की अगली चेक की अगले वाला ले सकते क्या हम लोग. इधर हम लोगों ने चेक किया सेम थिंग जो ऊपर चेक की थी, बट दिस इज बेसिकली आउटसाइड द फाइल लूप, अगर लास्ट वाले में कुछ इशू हुआ तो लास्ट वाले का चेक किया हम लोगों ने r माइनस एल. वाई डिड वी नॉट पुट अ प्लस वन हियर? बिकॉज r इज गेटिंग इंक्रीमेंटेड हियर. इफ दिस थिंग वाज बिलो दिस देन वी वुड नॉट हैव पुट अ प्लस वन हियर, एंड देन वी जस्ट सी आउट मैक्सी. दैट्स इट. हम लोगों ने क्रैकाथॉन का राउंड 1 में इतने ही सवाल किए. From what I spoke to my other friends, this question was supposed to be done using a set. So basically binary representation दिया हुआ है, sorry numbers दिया हुआ है, उसका binary representation बनाना है and concatenate करना है to form a long binary chain. So I spoke to my friends जिन्होंने ये question solve किया था. मेरा implementation बाकी है, but from what I understand उन्होंने basically सब numbers लिए. There is something called bit set, say 64 or any इधर any कुछ भी आ सकता है, but usually 64 bits के numbers होते हैं, so 64 and this will give you the binary
representation of your number. So अगर तेरा number is say 4, this bit set, also this bit set gets stored in a string. Yeah. So your 4 will, in the string you will get stored 100. Now we just concatenate all those strings, just add a plus a and stuff like that. So substring concatenate हो गए. And then what those guys did was, so basically after concatenating, you will have a long ass sequence of 1 1 0 something to name 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 etc. randomly लिया मैंने, कुछ लॉजिक कोड के नहीं लिया. Basically what they did was take all elements one at a time. ठीक है, so check if there is a 0, check if there is a 1. So उधर से, और उन्होंने अनऑर्डर्ड सेट में डाला और सेट में डाला है. क्यों डाला है? क्योंकि बिकॉज 1 उसका लुक अप टाइम is O of 1. Worst case O of n, but only when there is an issue in the hashing. When this works internally by hashing basically. So yeah, so उन्होंने बाइनरी अनऑर्डर्ड सेट यूज किया और फिर एक ऑप्टिमाइजेशन उन्होंने जो किया, दैट वाज यूजिंग putting stuff in the set one thing at a time. Basically 1 digit वाले पहले put in किया उन्होंने, so 0 आया और 1 आया उसमें. ठीक है, they just checked if there exists a 1, there exists a 0, let's go, and सीधा put in किया. फिर 2 things at a time, ये दो and another optimization that they did कि अगर कुछ 0 से स्टार्ट हो रहा है, they straight up left it, so they did not count that one. So stuff like 1 1 counted है, 1 1 एक बार ही काउंट हो रहा है क्योंकि अनऑर्डर्ड सेट में डुप्लीकेट्स नहीं आते. 1 0 काउंटेड है. अब 0 0 काउंटेड नहीं है क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है. 0 1 भी काउंटेड नहीं है क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है. तो वैसी चीज़ें उन्होंने इंक्लूड नहीं की. And same thing 3 at a time, 4 at a time, on and on. And they just looked up if that query exists or not, and they just outputted yes or no, like that. So उन्होंने वैसा किया, हम लोग वैसा सोच रहे थे, but we did not think of those optimizations. So हमने किया नहीं वो, क्योंकि हम लोग अगर करते तो TLE आता पक्का. So that is basically it for round 1. Round 1 काफ़ी अच्छा गया. And on the leaderboard we were काफ़ी नहीं, हम लोग थोड़े कम चोरी की और थोड़ा हक दिया, टाइम पास किया. But the round 1 we are such. Next. Yep, we are 8. This is us. Shoot. This is us. And we were 8 after round 1. Next round, second round, round 2. Not exactly 8, but उसका रैंकिंग सब लोग अगर स्कोर सेम है तो 1 आता है. सो नॉट एक्जैक्टली 8, बट आई थिंक अराउंड 31st थे हम लोग, नहीं 31st नहीं, 19th थे हम लोग ओवरऑल. सो या, एंड राउंड 2 में बस कल से बेटर सवाल थे राउंड 1 से. सो या, हर गेम. So this was the question. Basically question is asking you if you can partition
if you can partition the entire array into at least two contiguous subarrays. Important point, at least two contiguous subarrays. Now, ये इसका भी कुछ काम है नहीं सर, रिमूव बॉल सब रिमूव करता हूँ, डिलीट करता हूँ, ये दिस बस you guys go right. ओके ठीक है चले and as your so again at least two contiguous arrays. For something to be divided into two contiguous arrays, say हमारा कुछ सीक्वेंस है 8, 9, 27 रैंडम ले रहा हूँ अभी के लिए मैं कुछ दिमाग नहीं लगा रहा, ऐसा कुछ रैंडम सीक्वेंस है हमारा, किधर भी स्पेस दे दो, ऐसा कुछ रैंडम सीक्वेंस है. बेसिकली इट इज आस्किंग कि can this sequence be split into two. रैंडम सीक्वेंस के नाम पे मैं 1 2 3 1 2 3 अभी के लिए ये दे रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए. तो कैन आई स्प्लिट दिस इनटू टू पार्ट्स सच दैट दोनों पार्ट्स का XOR इक्वल हो. कैन आई स्प्लिट दिस? यस आई कैन स्प्लिट दिस. दिस गेट्स स्प्लिट इनटू 1 2 3 एंड 1 2 2 3. तो cool. इसका XOR is 0 I think, I believe. 1 2 का XOR is 3, 3 का XOR with 3 is 0, and this का XOR is 3. Sorry, this का XOR is 0. So 0 आता है. Now this is case 1. The XOR of the entire array is 0. अगर XOR of the entire array is 0, compulsory there must be something in between so that मैं starting में I have considered no elements, so starting का XOR is 0, then I will get to some point A and then I will get to 0 again. ये 0 ending वाला 0, XOR of the entire array is 0, entire array, and A is any middle point inside that. ठीक है. So basically what is happening at A, अभी तक के elements का dot elements का XOR equals A and A के बाद वाले elements का XOR also equals A dot XOR also equals A, and since A XOR A equals 0, so ये फाइनल 0 आ रहा है हमारे पास. This is case 1. Basically every single subsegment जो बन रहा है, the XOR of every subsegment is same, so they get cancelled out. Now this is if there are an even number of subsegments, and since there are even number of segments, A or A cancel out हो रहा है.
sorry. So if the XOR of every subsegment is 0, they get cancelled out, and the output final XOR and the final XOR is 0. Cool, cool. Now this is case 1. Case 1, even number of sub-segments. Case 2, what if there are an odd number of subsegments? What if the array that I am given can be broken into an odd number of subsegments? Yeah. Let us say, for the sake of assumption, that there is some array that can be broken down to an odd number of subsegments. Say 1, 2, 1, 2, 1, 2. This can be broken down into odd number of subsegments, which are 2, 1, 2, and second subsegment and third subsegment. Third subsegment. So it can be broken into 3 subsegments. Now, does it follow this case where the XOR of the entire thing is 0? No, it does not. Because इधर तक का XOR is 0, इसका XOR is 3. Okay. XOR of the final thing, XOR equals 3. So इसका हम लोगों ने क्या किया? Basically, we use something known as prefix XOR, which is basically we build a new vector which carries the XORs till now. Okay. So we know कि initially when we have not taken any elements, XOR 0 है. फिर 1 का XOR is 1. फिर XOR of 2 with 1 is 3. XOR of 1 with 3 is 2, I think. Yep, it is 2. XOR of 2 with 2 is 0. XOR of 1 with 0 is 1. XOR of 1 with 2 is 3. So this technically does not fit into this case because हमारा 3 आ रहा है. So normally नहीं आना चाहिए, but we basically check if this 3, the last 3, has another that basically is, we see the iterate from the beginning and check if there is a 3 and then a 0 after that. ठीक है, यही same order होनी चाहिए. Order is 0 A 0 A. Why must this order exist? Because if the XOR of prefix XOR till the element, till the till this element equals A, and if this afterwards मेरा XOR अगर 0 हो रहा है, that must mean कि इस वाले पार्ट का XOR equals A, and then A to 0 वाले पार्ट का XOR also equals A, and since XOR of A XOR A equals 0, इसलिए मेरा ये 0 आ रहा है इधर, and इधर और एक A है, that means कि 0 से ये वाले पार्ट का XOR equals A. ठीक है, so this part equals A. Basically we have split it into odd number of sub-segments, sub-arrays. Cool. Basically n number of segments. So कोड किधर गया भाई? So this was our code. Input लिया, ये लिया, फिर इधर हमने prefix XOR बनाया. Prefix XOR is, as I explained to you guys, prefix
Can I edit it? Cannot edit here. प्रीफिक्स और इस हम लोगों ने एक वेक्टर ऑफ प्रीफिक्स बनाया जिधर हम लोग जोर की वैल्यूज अपडेट कर रहे हैं बेसिकली जोर ऑफ ए आई इंटू जोर ऑफ प्रीफिक्स अभी तक का कितना जोर है इंटू दैट करंट एलिमेंट इक्वल्स जोर इक्वल्स प्रीफिक्स में आएगा वो अगर हम लोगों ने चेक किया कि अगर हमारा लास्ट एलिमेंट इक्वल्स 0 then see out yes that is case 1 as I said तो सीधा कंटिन्यू कर लो कंटिन्यू इज नेक्स्ट लूप में जाओ अब केस 2 कम्स हियर ठीक है केस 2 अगर एक मिनट राइट सॉरी कॉल आया था बीच में तो उधर गया मैं एंड रिकॉर्ड हो रहा है माइक्रोफोन भी चालू है ठीक है सो हम लोगों ने कूल फ्लैग्स यूज़ करके ये क्या ये प्रीफिक्स जो लास्ट प्रीफिक्स है उसकी वैल्यू ए ली हम लोगों ने बना लिया एल एल इज लॉन्ग लॉन्ग डिपेंड करके लगाया एंड फिर हम लोग सीधा आइटरेट करते गए फर्स्ट वी चेक कि अगर पहला वाला फ्लैग फॉल्स है एंड अगर हमारा कोई भी प्रीफिक्स बीच में ए आता है तो हम लोग फ्लैग को ट्रू कर देते हैं एंड अगर पहला वाला फ्लैग ट्रू है और पहला वाला जो फ्लैग है वो अगर ट्रू है बेसिकली वी हैव फाउंड एन ए बिफोर दिस देन आफ्टर फाइंडिंग एन ए वी फाइंड द जीरो as I explained before here 0a0a and again this logic can be extended to anything that you want 0a 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 कितने भी हो सकते हैं ठीक है so yeah we found कि if there was a zero after that a अगर there was a zero हम लोगों ने फ्लैग लगा के ट्रू किया एंड अगर दोनों फ्लैग हमारे ट्रू है तो yes otherwise no simple basic so this ran and it got all correct easy है उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में थोड़ा हार्ड है बट कुछ सवाल आसान है
Homework has a brilliant mind. He's then here is the main part. When he takes one injection, he dreams one more dream that night. After that day, each dream gets multiplied by a factor of k. With passing of every night, he has n dreams the last night. Then he will have n into k. Now, here's the thing. This, to me, sounds extremely similar to how decimals work, decimal number systems work. अगर मेरी k की वैल्यू से 10 है, then after one night I am in the ones place, फिर मैंने इंजेक्शन लिया और 1 plus 1 हुआ, then after 2 nights I am in the 10th place. After the next night I am in the 10th place. After the third night I am in the hundreds place. Thousands, 10,000s, 1 lakh, 10 lakh. So 10, 100 क्योंकि multiplied by k हो रहा है. So what if we make a number system in k? You can definitely do that. So वही हम लोगों ने किया. Basically हमने खुद की नंबर सिस्टम बना ली k में. So एक सेकंड, open an editor. This नंबर सिस्टम बनाई हम लोगों ने, इनपुट लिया और फिर while m, this is basic what you normally use to convert decimal to binary and stuff like that. So ये basic वही चीज़ है. So हम लोगों ने हमारा आंसर was a kind of counter variable basically. Counter नहीं बोल सकते, but answer was answer, ठीक है. So उसमें हम लोगों ने उसका ये रिमाइंडर ऐड किया, एंड रिमाइंडर ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया बाय k टू गेट टू द लोअर वैल्यू. सो 1000 से 100 बराबर वैसा टाइप लोअर वैल्यू. सो यही था और कुछ था नहीं इसमें, इतना ही था ये सेकंड क्वेश्चन में. थर्ड क्वेश्चन इस सबरे का, ये हमारे से हुआ नहीं, हमारा टीएल ही आ गया. लीडर बोर्ड में कहाँ पे देखते हैं. Yes, so this is us and कोड देख सकते हैं आप, पता नहीं मुझे. I do not think we can see the code right now. Okay, हम लोग कोड देख नहीं सकते हमारा. So मैं सिर्फ तुमको बताता हूँ हम लोग क्या सोच रहे थे उसमें. We were basically thinking कि ये सवाल पढ़ लो. They are given a sequence of magic stones, and they said a group of stones is determined by the median of their observation inscriptions. It is considered worthy if the length is at least k. Your mission is to determine the maximum power that exists for at least one worthy group whose median is greater than or equal to m. Okay, so और हमको यही m जो है वो आउटपुट करना है. Yeah, and also maximum है, so equal to is best, greater than कर नहीं सकते. So what were we thinking? And इधर summary लिखा है. So summary लिखा है specifically. If you guys were thinking कि सीधा sort कर लो और फिर sorting का ending वाले के है
ये कौन सा है? nth। हाँ, एंडिंग वाले के एलिमेंट बता दो। नहीं, वैसे नहीं कर सकते। हम लोगों को एवरी के एलिमेंट्स देखना पड़ेगा। ये 5 एलिमेंट्स हैं, उनका मीडियन ढूंढ लो एंड फिर ट्राई करो। फिर ये 5 एलिमेंट्स है, उनका मीडियन ढूंढ लो और ट्राई करो। वैसा करना पड़ेगा हमें। हम लोग क्या सोच रहे थे, व्हाट इज द फर्स्ट ब्रूट फोर्सिंग दैट वी कुड थिंक ऑफ। सीधा हम फॉर लूप लगा लो, आइटरेट करते जाओ इधर से इधर तक, एंड वेक्टर में डालो, नए वेक्टर में डालो ये सब चीज़ें, एंड इसका सीधा सॉर्ट करते जाओ। सेम फॉर दिस थिंग, वैसे ही कर दे जाओ। दिस obviously gives a TLE, क्योंकि भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो जाती है, बहुत ऊपर जाती है। एल लॉग एन का सॉर्टिंग का जाता है, और फिर हम लोग आइटरेट कर रहे हैं, सो बहुत ही ऊपर जाती है, एंड दैट डज नॉट फिट दिस एट ऑल। सो TLE आ रहा था हम लोग को। फिर हम लोग ऐसे रैंडमली आइडिया जब ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे, वी वर थिंकिंग कि मे बी मल्टीसेट से हो जाएगा, ऐसे रैंडम थॉट्स सोच रहे थे। बट पता नहीं, और इसके बारे में मुझे बात करनी पड़ी, ऐसा ऐसा कैसा है पता नहीं। हम लोग सोच तो रहे थे मल्टीसेट से ट्राई करेंगे ऐसा वैसा, बट इसका कुछ एग्जैक्ट साइड नहीं किया है।